I started trembling and ship का पीछे वाले part से I saw like 3 random people walking towards me. Okay. Tell me some crazy adventures that you've done. मतलब, you know, Yeah. या फिर some crazy things that you've seen. So in this- like I said about being street smart, yeah? Yeah. So that thing had happened that day in Indonesia. Uh-huh. So that Indonesia part was only really crazy. So you remember I told you that we have 6 on 6 off. Uh-huh. So if it is 6 off and if I'm going out to have fun, then again I have 6 on. So I have to work for the rest of the night. Right. So 12 to 6 was my working time. Okay. So शाम को 6 to 12 I went out, had fun, but then रात को 12 to 6 I had to work. Right. And now I haven't slept. Right. So I am there just manning the gangway, मतलब आने जाने की जगह. It's morning 3 or 4 and Indonesia में, and I am like fuck, I'm so sleepy and I slept. You know, I just slept like that. In like 15-20 minutes I woke up and usually 3 लोग रहते हैं deck पे. Okay. So my 2 of my seniors, one guy was checking the mooring ropes, मतलब जो ship ropes pass करके it is held with the ropes, right? So he just went to check it कि tight तो नहीं है, loose तो नहीं है. And one guy was in the cargo control room. He was just talking to the officer about discussing something. So basically I was alone on the deck. And in 20 minutes I just wake up. I was like, I'm feeling really sleepy. I think I should walk a bit. मैं उठा और मैं थोड़ा सा गैंगवे से मतलब तू चलने के लिए जैसे मुड़ा, आई जस्ट वॉकड अ बिट एंड शिप का पीछे वाले पार्ट से आई सॉ लाइक 3 रैंडम पीपल वॉकिंग टुवर्ड्स मी. दे वर ऑन द शिप, दे वर वॉकिंग टुवर्ड्स मी. आई एम लाइक ब्रो ये कौन है, मतलब कार्गो सर्वेयर्स या लोडिंग मास्टर जो यूजुअली आते हैं शिप पे. बट देन आई एम थिंकिंग इतने सुबह 4 बजे ये लोग क्यों आए, यू नो. एंड देन एज दे केम लाइक 10-15 मीटर पास, वन गाय हैड लाइक दिस वाटर टाइट डोर टाइट करने के लिए जो पाइप रहता है ना, वो पाइप लेके आ रहा है ऐसे चप्पल विप्पल चड्डी में, एंड दे जस्ट वॉकिंग एट मी. एंड देन आई वाज लाइक फक दिस, ये कुछ तो गड़बड़ है. एंड आई एम लाइक अ 19-year-old kid, okay. I started trembling, okay. मैंने वॉकी टॉकी उठाया रिपोर्ट करने के लिए कि देयर आर लाइक अनआइडेंटिफाइड पीपल ऑन द शिप. तभी वन गाय वाज लाइक स्टार्टेड वॉकिंग ब्रिस्कली टुवर्ड्स मी एंड ही वाज लाइक वी डोंट वांट टू स्टे. मेरी फट गई, मैंने वो वॉकी टॉकी फेंक दिया और मैं जस्ट लाइक पीछे चला गया. एंड आई वाज लाइक कि ब्रो चिल बिकॉज fuck the ship bro, take whatever you want to, don't do anything to me bro, you know. Like I don't want to die and shit. And then वो gangway जहाँ से हम उतरते हैं वहाँ से मैं पीछे थोड़ा चला गया. And then he just those 3 guys, they just like left from the gangway. And one of the guys जाने से पहले he looked at me, he was like brother peace. I was like peace bro, please go bro. As soon as they went, I immediately informed my seniors. They all came running down. We saw नीचे they had this little boat. वो boat से एक बंदा his like वो हमको बाय वगैरह बोल के गया bro, you know. And they just flew off. And then we just went running पीछे. We saw स्टोर वोर पे ताले लगाए थे हमने, सारे ताले तोड़ दिए थे. बट लकीली दे डिडंट टेक एनीथिंग. Why? आई डोंट नो, मे बी दे डिडंट फाइंड व्हाट दे वांटेड टू, बट चोरी नहीं हुआ. चढ़े थे पर चोरी नहीं हुआ. एंड दैट्स व्हाई वी वेंट टू सेकंड ऑफिसर एंड टोल्ड देम कि ये बात ऊपर तक नहीं जानी चाहिए. Okay. Yeah, and I told them कि I wasn't sleeping. I think they just climbed from behind the ship, but I think they just saw me look at this bastard sleeping. What a loser. And then they just went, come on boys, let's go, you know. Fucking hell, bro. I was so little. Very, I was very so close scared. to piracy. Yeah, bro. It was a bit of piracy. And these guys, they don't have guns and shit, but they have like these weapons which are like rusted and all. And गलती से कुछ हो गया वगैरह. I'll just, you know. Yeah. And I was shivering that day. What just happened? You know, मैंने सुना था कि इंडोनेशिया में चोर आते रहते हैं. I was like, हाँ ठीक है, डर गया मैं. But सच्ची में आते हैं भाई. That was the closest piracy thing I have been with.